Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री A.K. भट्टाचार्य। श्री भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Key domestic indices witnessed modest losses. Sensex closes near the 61,750 level. Nifty settles below 18,350 points. Gold prices hover around 52,900 per 10-gram level for December contracts at the MCX, and Brent crude oil prices declined to trade at $91.50 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 61,750 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 18,350 के नीचे हुआ बंद। एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें कम होकर $91.50 प्रति बैरल के आसपास रहीं। शुरुआत करते हैं प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों से, जहां आज मामूली गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में गिरावट आई। सेंसेक्स 61,750 के करीब बंद हुआ और निफ्टी 18,350 के पास आ गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.37% की मंदी से 230 अंक कम होकर 61,751 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.36% की गिरावट से 66 अंक कम होकर 18,344 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.33% के नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.27% की गिरावट दर्ज हुई। The key domestic indices today witnessed modest losses. Both indices declined amid negative cues from the global share markets. Sensex closed near 61,750 points, while Nifty settled near 18,350 level. Sensex fell by 230 points, a 0.37% to close at 61,751. Nifty also slipped by 66 points, a 0.36% to end at 18,344. In the broader market at the BSE, mid-cap index declined by 0.33%, while the small-cap index fell 0.27%. In the Sensex Pack, 8 companies posted gains, while 22 logged losses. Larsen & Toubro was the top gainer, as it added 1.3%, followed by ICICI Bank, Bharti Airtel and Power Grid, which surged by 0.6% each. On the other hand, Titan declined 2.3%, Mahindra & Mahindra fell 2.2%, Maruti slipped 1.6%, and Dr. Reddy's Laboratories ended 1.5% down. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 3 sectors gained while 16 logged losses. Capital goods climbed 1%. Telecom and industrials both gained 0.5% each. On the other side, Consumer Durables Index plunged 1.7%, utility sector declined 1.5%, and auto index fell 1.4%, and the power sector slipped 1.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,422 companies gained, while 2,081 companies fell. Shares of 113 companies remained unchanged. AKB, what's your take on the market? It's range bound. The market only fell by 230 points for a market that had crossed 62,000 mark. And if you look at the FII and the DII being net buyers, but only to the tune of 500 to 600 crores each, the volatility index is below 15. Is this because of low volume participation right now? And what is the market thinking? Well, the market is stepping back right now.
stepping back to take a fresh look at what lies ahead. As you rightly pointed out, that intraday trading, the market, the Sensex, went up by 400 points and crossed 62,000 actually in Sensex. And then it fell, and 230 points is, to my mind, on a base of 61,000, is not a very big fall either. What is happening are a set of developments that must be engaging the minds of the stock market participants. Number one is what is happening in the U.S. In the U.S., there is serious rethink going on what should be the pace of increase in the interest rates. In a sense that the US FOMC is reviewing whether the kind of 75 basis points increase every meeting, FOMC meeting, is the right pace, or it should be lower at 50 basis points. Now, which has given some room for optimism on the part of the foreign portfolio investors, which is why, as you mentioned, that some money is coming into the emerging economy market, including that of India. That is one development. The second development is that the market is waiting for signals that should come out from the Reserve Bank of India, which will be holding its next monetary policy review meeting the first week of December. Now, there also the expectation fueled by the latest number on inflation, which has come down, and industrial growth figures continuing to be subdued, and trade numbers showing contraction. So all these factors are going to probably to influence the kind of debate and discussion that happens within the Monetary Policy Committee on whether it should be 50 basis points increase, a lower increase. So that is what is keeping the markets slightly range-bound and waiting for it to what to do next and waiting for the signals. And the third big signal that will probably be available over the period of next few weeks in the run-up to the budget is what kind of budget that the government policymakers are thinking to present on February 1st. Having said that, let me also say that the stock markets are at a point where you cannot judge the stock market movement by indices alone. You have to dig deeper into what is really happening to different sectors, different stocks, and today's stock markets are influenced far more by isolated single events which are impinging on and impacting on the stock market sentiment, and therefore for the stock market investor the advice should be, although you haven't asked me to give my advice, what should I tell them? But the stock market player must realize that this is not the time to take risks. Risks are off the table. Wait for further signals to come in, and don't judge the stock market by the indices. Go by the stock market on what is really happening in different sectors and different companies. इनफैक्ट सेक्टर्स पर ही हम अगली डिस्कशन ले जाना चाहते थे और आपने आउटलाइन किया है कि सेक्टर्स पर ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है. हम यहाँ इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात नहीं करते हैं मिस्टर भट्टाचार्य, लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है जिसमें हम ग्रोथ के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हाई ग्रोथ की तरफ भारत बढ़ भी रहा है, अभी ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इतना जोर दे रही है सरकार. इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनके प्रोस्पेक्ट्स आपको कंपैरेटिवली मच ब्राइटर लगते हैं? देखिए, आपने एक अच्छा एक मुद्दा उठाया है. इस वक्त स्टॉक मार्केट मैं मानता हूं एक ऐसी दिशा में है जो एक पूरी तरह से एक पोस्ट कोविड सिचुएशन को एसेस कर रही है. कोविड के टाइम में जो हुआ था, जो स्टॉक मार्केट जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा था, कि जिसे हम कहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेस इंडस्ट्रीज, जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं है, उस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से बढ़कर जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हुई, टेक कंपनीज हुई, या टेक्नोलॉजी कंपनीज हुई, जूम जैसे कंपनी या गूगल मीट वैली कंपनी, जो गूगल, इनकी जो इतनी बड़ी ग्रोथ हमने देखी कोविड टाइम में, वो कोविड का टाइम चला गया है. इस वक्त
हम जो देख रहे हैं वो है एक जो फिजिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो कॉन्टैक्ट सेक्टर जिसे हम कहेंगे, जहां पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सेक्टर की इकोनॉमी वापस आ रही है और आने की उम्मीद कर रही है। और वो सेक्टर है, अगर आप ऑलरेडी अब देखेंगे, होटल सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, नॉट ऑनलाइन बट फिजिकल एजुकेशन सेक्टर, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप ग्रोथ की तरफ देखते हैं, कौन कौन से सेक्टर आगे बढ़ने की आशा हम कर सकते हैं, आज का स्टॉक मार्केट वो एक बहुत बड़ा एक इंडिकेट देता है। आज के स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि जो कैपिटल गुड्स सेक्टर वो अच्छा किया है, जो टेलीकॉम सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा किया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है ऑटो में, क्योंकि ऑटो में जो है वो दो सेक्टर हैं। ऑटो में एक तो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर और है ट्रेडिशनल सेक्टर। मैं मानता हूं जो ट्रेडिशनल सेक्टर थोड़ा बहुत सेटबैक मिला है, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर है, मुझे ये मालूम पूरा नहीं है कि कितना सेगमेंट उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर जरूर ऑटो सेक्टर में ये टेंशन अभी भी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर कितना बढ़ेगा, उसके लिए अलग कोई एक सूचकांक होगा, हमारे लिए, हमारे समझ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल सेक्टर, रोड्स, एविएशन, ये सेक्टर्स मैं समझता हूं कि आगे की 6 महीने के अंदर हम ग्रोथ की जो आशा की जो किरणें हैं वो हम देख सकते हैं। तो आईटी और टेक की आपने बात की, आपको लगता है कि जो हम बहुत सारे ले ऑफ्स की बात सुन रहे हैं बिग टेक कंपनीज में, वो भी एक सूचक है कि शायद ये बूम यहां जो थी वो थोड़ी रिसीड हो रही है? आपने एकदम सही कहा कि जो आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कोविड काल में जो एक एक्सुबरेंट ग्रोथ जिसे हम कहेंगे वो हमने देखी, और उससे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, लोगों को हायर किया। अब कोविड जाने के बाद और जब सिचुएशन रीअसेस कर रहे हैं, वो मार्केट इस वक्त नहीं दिख रही है उन कंपनियों के लिए। जैसे हमारे भारत में देखिए, एडटेक कंपनीज ने रिट्रेंचमेंट किया है। अगर आप बायजूस को कहेंगे, यूएन एकेडमी को कहेंगे, सारे लोगों ने रिट्रेंचमेंट किया है, क्योंकि उनकी जो असेसमेंट जो थी मार्केट जिस तरह से ग्रो करेगी, वो सडनली कोविड जाने के बाद वो मार्केट को रीअसेस करना पड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में, या गूगल में बोलिए, या मेटा में बोलिए, या ट्विटर में बोलिए, जो हो रहा है वो एक पोस्ट कोविड रीपोजिशनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का एक सूचना हमें दे रहा है वो। AKB, clearly we know that following NASDAQ, which fell by 140 plus points in the US, that's a reflection of the fundamentals of the companies. That's why we are seeing the layoffs. What about Bank Nifty? I want to drive your attention to the banking index, which has actually, the companies which comprise the sector have gone up because the repo rate has been hiked, and that's been advantageous to lenders. It's at 5.9%, the repo rate, and it's expected that the central bank will raise it by 30 to 50 basis points more. So what would you advise our listeners in terms of the banking sector, PSU and private banking, once the RBI meeting takes place? And also to add that there is a projection by the RBI that they intend to, or rather the government intends to reduce inflation to 6% in the next 4 months. Is that achievable? Well, let me first tackle your first part of your question on the banking sector. Now, the banking sector, as you know, is integral and a critical player in assessing any economy. Now, in the last few months, the banking sector has done very well, even during the COVID time, and that is one sector which is expected to continue to do well even after COVID time. Now, they have deleveraged themselves. The NPA levels have come down. They are recapitalizing themselves. The lending is 13.5%, 14% growth of credit growth, and it is going not to the retail sector but to the industrial for capex building. Now, these are all positive signs of the banking sector. Now, there is also a negative side to the banking sector. The negative side is that while the credit growth is at a high, at 15% or 14% high, the deposit growth is not
maintaining the same pace. So deposit growth is in the single digit, is 9%. So as a result, what is happening is even the RBI governor has drawn attention to this concern, that where will the banks get their money, cheap money, relatively cheap money, and use that money to finance and fund this lending growth and lending demand that is coming up, because the corporate sector is now coming back into some sort of an investment cycle that is coming back. So banking sector watchers are keenly assessing that whether the net interest margin for banks squeeze a bit, come down a bit, because the moment they have to attract more deposits, they have to raise the interest rate that they give to you and me for my deposit that I have with the banks. Now, once that happens, their margin will squeeze. Therefore, their bottom line will be affected. So, for the investors' point of view, the banking sector offers these two scenarios. At one level, they will keep growing, so they do keep doing well. But at another level, their bottom line may be adversely impacted. So, therefore, watch out for both the possibilities. So, which is why the banking sector is a bit of a puzzle and a question mark for those who are looking at this sector for future investments. आरबीआई ने हमेशा कहा है ऑफ लेट कि बैंक्स को खुद अपना जो फाइनेंसेस है उनको जहां तक हो सके मैनेज करे, हमें पैसा रिकैपिटलाइज करने की जरूरत ना पड़े. सो आपको लगता है कि बॉन्ड इश्यूज आएंगे बैंक्स द्वारा और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी? जरूर, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था जो है वो 5 साल पहले जो बैंकिंग व्यवस्था थी, यहाँ जिस समय हमने एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखी थी कि बैंकों ने ऋण दिया, जिन कंपनी को दिया उन कंपनियों की सीमा क्षमता ही नहीं है कि वो ऋण को वापस करे, वो एक तरह की समस्या थी. और द्वितीय प्रॉब्लम ये था कि बैंक के पास जो ऋण गई वो वापस नहीं आ रही है, तो उनको दूसरे जगह ऋण देने के लिए कुछ क्षमता नहीं है. तो ये जो एक विशेष साइकिल बन गया था, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट से आने से, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी पैकेज आने से, जो लेटेस्ट जो आईबीबीआई का जो डेटा जो आया उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से जो रिकवरी रेट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स सबकी रिकवरी बैंक लोन से कंपनियों से ज्यादा अच्छी आ गई है. तो उससे क्या हो रहा है कि जो बैंक व्यवस्था जो है, बैंक व्यवस्था आज की तारीख में ज्यादा रोबस्ट लग रहा है, जो कि 5 साल पहले उतनी अवस्था नहीं थी. इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि अच्छी बात है, अभी तक हम रिकवरी किया है, पर जो अब डिपॉजिट स्क्वीज जो आ रही है, डिपॉजिट रेट को बढ़ाना पड़ेगा और आपको अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग की जरूरत होगी अगर आप जो लेंडिंग रेट को उसी तरह से पेस में मेंटेन करें. क्योंकि अगर लेंडिंग जो पेस जो है वो उसमें कमी आ गई तो रियल सेक्टर इकोनॉमी की जो क्रेडिट डिमांड्स जो है वो कहां से पूरी होगी. उसके बाद मतलब बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए एक्सटर्नल रिस्क हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त अंडर कंट्रोल है, पर उसमें हमें पूरी तरह से वॉचफुल रहना है उस जगह में. So clearly, we don't have an alternative to bank financing in the form of a robust bond market, which was there before. Reliance Capital, for instance, is facing action via asset reconstruction companies. That's one. Secondly, what's your advice to our listeners? Should they go for fundamentals or technicals of a stock if they're not watching the index? Because the index can be misleading as well. Should it be fundamentals or should it be technicals or a combination of both when they select their portfolio? Well, the first question, what I would say is that you are absolutely right that unfortunately there has been no successful strategy that have been implemented to revive and to have a functioning, robust corporate debt market. So therefore, Indian companies are increasingly and substantially dependent on bank finances. The only other window for them is external commercial borrowing or go to the capital market and raise risk capital. But if they want money from the banks,
but there is no third opportunity, third source of investment, and that is, in my view, an area that needs attention, and it must be. And to have an active corporate bond market, you need a regulatory framework, you need policy parameters which encourage these corporate bonds. As far as the stock market is concerned and the advice is concerned, I would say that this is the time when the fundamentals are more important than any other factors, because both the Indian economy and the global economy, they are going through a phase where a lot of reset, a lot of repositioning, a lot of reassessments of the problems and the prospects will take place in a post-COVID scenario. So ये रीअसेसमेंट जो भी आप कह रहे हैं, रीपोजिशनिंग, उसमें ये जो ग्लोबल रीऑर्डरिंग हो रही है आफ्टर ऑल दीज मेजर हैपनिंग्स लाइक कोविड और जो जियोपॉलिटिकल, उसमें और हम जो देख रहे हैं अभी हाल में इतनी मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बड़ी बड़ी, तो भारत की अब क्या लीडरशिप पोजीशन उभर के आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, G20 की जो अभी मीटिंग बाली में हुई इंडोनेशिया में, उसमें तो हमने देखा कि किस तरह से जो भारत का एक नारा G20 का नारा बन गया है यूक्रेन वॉर में। अब G20 की लीडरशिप भारत के पास आई है, और मैं ये इसके इकोनॉमिक बहुत इकोनॉमिक, हालांकि G20 की जो इम्पोर्टेंस 2008 और 9 जो ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ था, उस टाइम के तुलना में काफी कम हो गई है। पर तब भी मैं कहूंगा, जब G20 एक फाइनेंशियल रीऑर्डरिंग हो रही है, जहां पे डेवलपिंग इकोनॉमी जो इकोनॉमीज जो हैं, ग्रोथ, ट्रेड अब डेवलपिंग इकोनॉमीज में आ चुकी हैं, और ग्रोथ और ट्रेड डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं है। ये जो एक फंडामेंटल रीसेट हुआ है, इसको G20 अगर एक ग्लोबल एक सीन में, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क में इस चीज को फॉर्मलाइज करे, और ग्लोबल बॉडीज में डेवलपिंग इकोनॉमीज की कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर्स की जो एक रोल होती है, उसमें कोई इसका रिफ्लेक्शन है, मैं समझता हूं उसकी बहुत सख्त जरूरत है। और भारत की जो एक साल का जो लीडरशिप जो आ रहा है, वो इस एक मौका मिलेगा भारत को किस तरह से उसी रोल को बार बार रीइटरेट करके, दोहरा के, उसको विश्व में उसका जरूरी मर्यादा मिले, वो मर्यादा पा सके। तो उससे हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, सिर्फ भारत को नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी पूरी तरह से। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। एशियाई बाजारों में आज गिरावट रही, सिवाय सिंगापुर के, जहां का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की बढ़त पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4% लुढ़क गया, और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा, और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। फ्रांस का कैक 0.8% के नुकसान पर था। लंदन के फुटसी में 0.6% की गिरावट थी, और जर्मनी के डैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। AKB, briefly, the UK CPI for October is 11.1%. What are the challenges before Rishi Sunak, the Prime Minister, who is a Brexiteer and looking to forge a FTA with India? Doesn't it make the UK dependent on countries like India for trade and to get out of this economic mess? You know, in a global scene, no country is dependent on any other country. India can never be dependent on another country, and UK cannot be dependent on another country. FTA is an instrument, is a device through which both the countries will gain. It's a as they say, it's a win-win framework in a free trade agreement. Now, the very fact that Rishi Sunak has offered to complete these talks within a given time frame, although they are not meeting the earlier deadline of completing it in Diwali, will probably is indicative that the UK under Rishi Sunak is going to continue to pursue a cooperative and a relationship
of association. But those of us who believe that because Rishi Sunak is of Indian origin, UK will be very soft towards India in terms of finalizing the terms of trade with India on the FTA will probably are mistaken. Rishi Sunak is, after all, the UK Prime Minister, and he will first take good care of UK's economic interest before he can ever think of taking India's economic interest. And briefly, जो tax and expenditure plan आने वाला है, उससे आपको क्या major expectations है UK के? मुझे जो लगता है कि जो यूके का जो सबसे बड़ा जो एक फिस्कल एक चैलेंज उनके सामने है वो है कि किस तरह से जो वेलफेयर जो फंडिंग है उनमें, जैसे कि उनका पेंशन फंडिंग एक 2.5% ऑफ द जीडीपी यूके की, वो पेंशन फंडिंग वेलफेयर में सिर्फ जाती है एक स्कीम में, पेंशन स्कीम में, और उस 2.5% ऑफ जीडीपी को फाइनेंस करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है उनको। और जेरेमी हंट किस तरह से इस 2.5% की जो एक कंपल्शन है उसको किस तरह से उसको मॉडिफाई करें, उसको रिलैक्स करें, जिससे कि सरकार के ऊपर बर्डन कम हो, और उसी के साथ साथ टैक्सेशन ऐसे हो जिससे कि जो रिच को टैक्स देना पड़े पर जो आवाम जनता जो है उनको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिले। वो एक बहुत बड़ा है। मैं जेरेमी हंट की जगह शायद ऐसा जगह है कोई इस वक्त कोई nobody is jealous of Jeremy Hunt or Rishi Sunak. The UK is in that kind of a situation. Let's have a look at the US market. Wall Street's main indices ended lower yesterday. The Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.1%. The S&P 500 fell 0.8%, and the Nasdaq Composite Index declined 1.5%. Apart from the Nasdaq, the dollar index is at 107 right now from 113.14 earlier. Why is that the case? Briefly, this is a good sign. It's a good sign for not so much for the U.S. Actually, it's also for the U.S. and mostly for the emerging economies, because you will not see the kind of money that was going and flooding the U.S. market. There will be some roadblocks, and those money probably will get redirected towards emerging economies back again, like it has to happen earlier. Let's have a look at the oil market. Oil today extended losses as concerns over geopolitical tensions eased, and as rising number of COVID-19 cases in China added to demand worries in the world's largest crude importer. The crude prices fell around 1.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $91.55 per barrel, while WTI crude prices were at $84.05 per barrel. Do you see the dollar index coming down, reflecting how oil prices are moving right now? They're coming down. No, not really. Not really. I think what is happening is actually an illusion. What is the oil market is keenly watching is what happens in the first week of December 5, if I'm not wrong, is when that cap will get operational. If that cap gets operational, expect some increase and some increase for the crude oil, Brent crude oil prices, and that will not be good news for India. The only saving grace there is the Russian crude oil, which has now become the second biggest supplier to India, and that will probably give us some cushion from whatever happens after the price cap that is likely to be enforced by European and OECD countries. आइए चलें प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 135 रुपए कम होकर 52,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 775 रुपए की गिरावट से 61,220 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,766.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $21.25 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। आप आए स्टूडियो में और आपने हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भट्टाचार्य। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stock indices witnessed modest losses. Sensex closes near the 61,750 level. Nifty settles below 18,350 points. Gold prices hover around 52,900 per 10 gram level for December contracts at the MCX. And Brent crude prices declined to trade at $91.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.